गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं इस वक्त फीफी आइलैंड्स में और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वहां पे क्या क्या एक्सप्लोर करना है। स्नॉर्कलिंग, माया बे एंड ऑल द पॉपुलर प्लेसेस देयर एंड ऑल द फन ऑन द आइलैंड। स्टे ट्यून्ड, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। लेट्स गो। सुबह के 8 बजे हैं, सब कुछ बंद है अभी। पार्टी आइलैंड है, रात को लेट तक खुला रहता है सब कुछ। सो गुड मॉर्निंग। आज हम ये लॉन्ग टेल बोट लेके जा रहे हैं आइलैंड टूर पे to all the like sightseeing points around Phi Phi Islands, including Maya Bay, and we'll have some snorkeling as well. इसका टिकट हमें पड़ा 550 बात का। कल रात को ही हमने बुक किया था, 550 पर पर्सन, और आई थिंक 10-15 लोगों का ग्रुप होगा। सो लेट्स डू इट। एक्साइटेड पीपल? बट डल से लग रहे हो। Let's get on the boat, people. थोड़ा ही आगे आती स्नॉर्कलिंग के लिए रुक गए हैं हम। So we are at Shark Point for snorkeling. लेकिन शार्क नहीं दिख रहे क्योंकि वो छुट्टी पे हैं आज, ऐसा हमारे गाइड बता रहे हैं। स्नॉर्कलिंग टाइम, ऑल द बेस्ट टू अस। कितना डीप है बताओ? Are you standing? बहुत डिफिकल्ट है क्या? ब्रीथ करना मुश्किल है इससे। पानी पी लो। अभी कहाँ है जमीन? क्या दिख रहा है नीचे? फिश कहाँ है? खुशी देखो, खुशी। पानी का कलर देखो, तो यही भी 2 अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे लाइट कलर का टर्किश ब्लू और आगे डार्क। गिरा दे, छोड़। वेलकम टू बैम्बू आइलैंड। Oh yeah, welcome to Bamboo Island. A little bit of pain, but we are here. क्या व्यूज है यार। क्या जगह है ये सब ट्रीज ऐसे अप्रूव हो गए, ऐसे कैसे पड़े रहते हैं? ये तो काटे गए हैं, डेफिनेटली काटे गए हैं। बैम्बू आइलैंड में एक भी बैम्बू नहीं दिख रहा है। क्या बैम्बू? तो यहाँ पे नेशनल पार्क एंट्री के लिए देयर इज़ अ 400 बात एंट्री। नेशनल पार्क मतलब क्या? यही बीच, यही वाला आइलैंड जो है, और माया बे, उसका फिर अलग से पेमेंट नहीं करना हमें। शार्प है बहुत। ये शार्प, शार्क नहीं, शार्प। क्या शार्प? पत्ता नीचे। हाँ, लग रहा है। सॉल्ट वाटर में मैंने पहली बार डाला फोन अंदर। अभी तक चल रहा है। I'm floating, trying to
यार ऐसी जगह पे पहला स्नॉर्कल करते थे वो एटलीस्ट यू हैव गॉटन यूज्ड टू इट। आ गए हम बोट में वापस और पैक्ड लंच। क्या है अंदर? Some assorted rice with vegetables. That just sounds exotic. It is not. Doesn't look exotic at all. ये मतलब थाई वर्जन ऑफ खिचड़ी। तो अब हम आ गए हैं मंकी बीच पे। ढूंढो मंकी गए। मंकी मंकी मंकी। अच्छा होंगे यहाँ पे बंदर, तभी यहाँ पे लोग ऐसे खड़े हैं। कितना स्मूथ मिट्टी है यहाँ पे। Do not feed the monkeys. But where are the monkeys? Oh. Hi bro. What's up? Just look at the number of monkeys around. If you know. We are now at Viking Caves. I don't think we can go inside, but यहाँ से व्यू ऐसे ही देख लो. So finally about to go to the famous Maya Bay. भीड़ देखो यहाँ पे. यहाँ पे भी वही 400 बात का एंट्री फी है जो हमने सुबह एक बार दे दिया है. So we don't have to keep paying it again and again. No drone. So here we are, the famous Maya Bay beach.
सेल्फी नहीं है भाई। ये जगह इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था कि यहाँ के कोरल्स वगैरह सब खराब हो गए थे। लोग आके स्विमिंग करते थे, सनस्क्रीन जो होता था वो कोरल्स में लगता था और कोरल ख़राब होता था। सो दे शट ऑफ द एंटायर बीच फॉर 4 or 5 years। अब भी इसी साल ही फरवरी में इसको खोला गया है वापस, February 2022। And there are a lot of restrictions now. So that is all for this video guys. I hope you enjoyed it. Please do make sure you like the video, leave a comment below with your thoughts and subscribe to my channel if you haven't yet. अगले vlog में हम एक बहुत ही पॉपुलर जगह जाने वाले हैं. Stay tuned.